Guys, welcome back to the new video. In this video we are going to talk about BOYA's BY-M1 Lavalier microphone. This microphone is very well known for its voice quality. If you go to Amazon and fetch the list of top 100 musical instruments, this one is gonna be on top of the list. तो चलो देखते हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं हमें इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती है और साथ में इसके वॉइस क्वालिटी का भी हम टेस्ट करेंगे इसी वीडियो के अंदर. एंड आई विल पुट सम फुटेज वेयर एंड आई विल बी रिकॉर्डिंग यूजिंग दिस माइक्रोफोन. ऑलराइट गाइस, सो लेट्स अनबॉक्स द थिंग्स एंड सी व्हाट ऑल वी हैव इन द बॉक्स. Alright, so there's some paperwork and it has some procedures like replacing the battery as it runs on a battery. Alright, so there are some tips about using the microphone with the smartphone, camera and other places. So it has this warranty card here as well because it comes up with a 1-year warranty. You can possibly fill it and reach out to the nearest store or their service support team wherein you can get a replacement if anything happens. Alright guys, let's take out the things from the pouch. It comes with the branding of BOYA. Alright, herein we have the microphone. So basically this comes up with a 20 feet long cable, which is I think enough to dry your clothes on roof. But yeah, this is the benefit with this microphone. We get 20 feet long cable, which possibly you can internally use and get a feel of wireless thing. And we have some more things over here. That's all about it. So this microphone basically has 20 feet long cable, I think, which is enough useful if you are using it internally and are basically just moving around. So I think it should be helpful in that way. It has this 3.5 mm audio jack that you can use with your mobile phone or your computer, and it also has this 6.5 mm jack that you can see can be used with the huge mics. Those mic setups are there wherein we can use this one as well. So this is one more thing. Also the windscreen is there. Along with that we have a clip, and also there is a battery because it needs a battery to run as it has a bit of gain control as well. तो चलिए गाइज, मैंने सारी चीज़ें बॉक्स से निकाली है. वी हैव दिस माइक, वी हैव a 6.5 mm audio jack, and we have this windscreen that we can put on the mic. So it also has this LR44 battery on which it runs. Let's try to put on the battery and try to use the microphone. Alright guys, the battery हो गई है place. Okay, on the microphone we also see a switch. On the one side it mentions about camera and other side it mentions about smartphone. So if you're trying to use the camera तो आपको कैमरा पे लेके जाना है, and if you're trying to use a smartphone तो आपको स्मार्टफोन पे लेके जाना है. इसका जो ओवरऑल वेट है गाइज वो है 100 ग्राम्स. काफ़ी छोटा सा ही है, बट यह वायर बहुत ज़्यादा है. इसका एक ये क्लिप भी है यहाँ पे जो कि आप अपने कॉलर से या कहीं पे किसी क्लॉथ के साथ बंद कर सकते हैं. और इसका यहाँ पे एक और क्लिप है जो ये बड़ा सा माइक है यहाँ पे, और ये आप कहीं पे भी अपनी शर्ट या पैंट पे भी लगा सकते हैं बिकॉज इट हैज़ इनफ वायर टू रीच आउट टू योर नेक. और इसके साथ एक और सेल मिलता है हमें क्योंकि ये बैटरी पे चलता है, जो कि मैंने इसमें लगा लिया है ऑलरेडी. तो अगर आपको इनके सेल रिप्लेस करना है तो ये आप यहाँ से खोल सकते हैं इसको एंड देन पुट द सेल ओवर हियर. तो करते हैं इसको बंद हम और देखते हैं इसका वॉइस क्वालिटी कैसा है. अभी जो नेक्स्ट पार्ट है वीडियो का, आई विल ट्राई द माइक्रोफोन, और उसके बाद हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे जो मैं माइक्रोफोन यूज़ कर रहा हूँ जिसका मैंने इससे पहले रिव्यू दिया है, और ये वाले का डिफरेंस देखते हैं कैसा है. ऑलराइट गाइज, जो आपको भी आवाज़ सुनाई दे रहा है ये है बोया का जो BY-M1 माइक्रोफोन है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे. ये आवाज़ अभी इसी माइक्रोफोन से आ रही है, और इसके बाद मैं एक और माइक्रोफोन का टेस्ट करूंगा जो कि प्राइस में इससे बहुत कम है, जिसका मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था. तो लेट्स सी द डिफरेंस. तो अगर वॉइस क्वालिटी में डिफरेंस है तो इट मेक्स सेंस कि आप 1000 रुपये का या 900 रुपये का माइक्रोफोन परचेज कर रहे हो. अगर 300 का भी वही काम कर रहा है और 1000 का भी, तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. तो लेट्स सी दूसरे एक माइक्रोफोन का परफॉर्मेंस कैसा है. ओके गाइज, जो अभी आवाज़ आ रहा है ये मोनो का जो लेवलियर माइक्रोफोन है, इससे पहले जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी वहाँ से आ रही है. तो मैं आपको भी दोनों ऑप्शन दे रहा हूँ चेक करने के लिए कि वॉइस क्वालिटी किसका अच्छा है. तो आई थिंक इट विल गिव यू अ ब्रीफ आइडिया ऑन व्हाट टू परचेज इफ़ यू आर प्लानिंग टू गेट अ माइक्रोफोन. ये माइक्रोफोन जो मोनो का लेवलियर माइक्रोफोन है, इसमें प्रॉब्लम इतना है कि वायर थोड़ा सा छोटा है. अगर आप कैमरा अपने से थोड़ा सा दूर रखते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है. और जो ये बोया का माइक्रोफोन है इसमें वायर तो काफ़ी ज़्यादा है. थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है, वायर ज़्यादा लंबा है, ज़रूरत से ज़्यादा है.
और इसका ज़रूरत से थोड़ा सा छोटा है. I think now you should be able to decide which microphone has a good sound quality and accordingly take a decision if you are purchasing. On that note, thank you so much for watching this video. We'll see you in the next one.